Mr. Vivek undertook a contract for the construction of building on 1st Jan 2018. The contract price being 15 lakh. Now, who is undertaking the contract? Mr. Vivek is undertaking the contract. And contract kiske regarding it? It is regarding the construction of building. Now, the contract started on 1st of Jan. So obviously, अगर ये कौन सा year follow करे, they are following the calendar year. So if it got started on 1st Jan, तो obviously जो closing date होगा इसका क्या होगा? 31st of December. The following details are available for the year 2018. Now they have given us a certain details regarding the whole of the year कि क्या क्या हुआ है इसमें. The first one is material purchased. Now obviously the सबसे basic thing which is required in the contract is a material होगा तभी आप construction start कर पाओगे. So material purchase, again an expense, and the contract it will be shown in the contract account debit side. Material issued from the stores, हमें material कहाँ से आया है? Stores में से directly आया है. So again this is coming in and contract account debit side. Laborers employed on a site, obviously material चाहिए साथ साथ में labor भी लगेगा. Now labor को we are going to pay the wages, so you will be writing down where contract account debit side पर 2 wages, sorry 2 labor. Next one is plant installed on site. This is nothing but you have purchased the plant for this purpose. तो अगर आपने प्लांट इंस्टॉल किया है साइट के लिए तो अगेन इट विल बी डेबिटेड. नाउ आई टोल्ड यू क्लास वी हैव अ टू ऑप्शंस, ईदर टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, ठीक है, डायरेक्टली हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और what we can do, we can write it down the opening balance of a plant on the debit side and the closing balance on the credit side, तो automatically depreciation का जो adjustment है वो adjust हो जाएगा. Fine. So this there are two ways you can do the any of the one way. हाँ, ये दोनों में से कोई भी आप एक वे को यूज कर सकते हो सब में. Next one is direct expense, again an expense, and it will be recorded in the contract account debit side. Proportionate establishment charges. So here you are giving this establishment charges on the proportionate basis. Again, expense contract account debit side. And remember one thing, in the contract account, you are going to write down all those expenses which are related to the contract only. Other than contract, you don't have to write it down. You don't have to mention it. Cash received is 80% of work certified. That is 6 lakh. अब देखो हमें डायरेक्टली वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, दे हैव गिवन अस द कैश रिसीव्ड कि हाँ हमें 80% कैश जो रिसीव्ड हुआ है वो 6 लाख है, और ये जो 6 लाख है वो 80% है वर्क सर्टिफाइड का. सो इफ दिस 6 लाख इज रिप्रेजेंटिंग 80% तो 100% का कितना, ठीक है. सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. हम अभी यहाँ पर ही वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो राइट work certified is equal to 6 lakh into 100 divided by 80. Which will be equal to 7,50,000. And where you record the work certified, obviously contract account के credit side पर. Next is work uncertified, मतलब work complete हो चुका है but उस work को certify नहीं किया गया है. Again contract account में credit side, this both will be your this WIP, that is work in progress. Material return to store, हमने material क्या कर दिया, वापस return कर दिया. So this will be contract account के credit side पर. Materials in hand at the end, so this is a closing material which has been given. This is a closing stock of material. So closing stock of material will be recorded where, contract account credit side. Wages outstanding, अब देखो ये जो लेबर को हमने एम्प्लॉय किया है उनकी वेजेस अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पे करना बाकी है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड this 18,000 in this 90,000, क्योंकि वेजेस आउटस्टैंडिंग, अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या करते हैं हम, we add to the expenses and the second effect we write down on the liability side if we are preparing a balance sheet. Direct expenses accrued, क्या हो गया है, expenses are accrued, this is also the outstanding, अभी भी पे करना बाकी है. तो what we can do, direct expense में we can add it up 24,000, since accrued means still payable,
तो अगेन अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका इफेक्ट कहां पर देंगे, लायबिलिटी साइड. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द अमाउंट दैट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट. क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और साथ साथ में ये भी बताओ कि कितना अमाउंट अपीयर करेगा बैलेंस शीट में. A part of the plant costing rupees 20,000 was stolen at the beginning of the year. स्टार्टिंग में ही 20,000 का प्लान क्या हो गया, चोरी हो गया. So obviously this 20,000 का जब प्लान जो चोरी हो गया, this is nothing but this is your loss by theft and it will be recorded in the obviously contract account credit side. And when हम जब closing material find out करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will have to do the working note. तो वर्किंग नोट में भी जो ओरिजिनल अमाउंट होगा उसमें से दिस 20,000 का जो भी प्लान स्टोलन हो गया दैट यू विल हैव टू सबट्रैक्ट इट. एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 रुपीज. सो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया है, 12,000 रुपीज ही पे किया है. नाउ क्लास व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब कितने का लॉस हो गया, 20,000 का प्लान था एंड 12,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला. सो 8,000 का क्या हो गया, we got a loss just because of the this theft. So जब भी हम liabilities में ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो 8,000 का लॉस है दैट आल्सो वी विल हैव टू एडजस्ट इट. ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर देंगे. Plant is depreciated at 20%. Fine. So this information is given for the this finding out the closing value of a plant. And as I told you कि अगर opening closing नहीं लिखना है तो directly also you can write it down the depreciation का amount. So let's first prepare a format, contract account का as well as the balance sheet का, and just give the heading in the books of Vivek, Mr. Vivek. Contract account for the year ended 31st December 2018. Because we know that agar starting date is 1st of Jan, so ending date will be 31st of December. Debit, credit, particulars rupees, particulars rupees. Same way you have to draw the balance sheet. Balance sheet is on 31st December 2018. Liabilities asset. Now let's start with the posting part. First one is material purchased. So where it will be recorded? Contract account, debit side. So to and this material is a direct material. I'm just writing down direct in the bracket. 2,40,000. One is material issued from store, contract account debit side. To material. Stores. Lakh rupees. Labor employed on site, so to labor. And we also have a outstanding, don't forget about that. So 90,000. In that we will add outstanding wages. Amounting to 18,000. So add 18,000. 1,000 plus 18,000. 1,08,000. Plant install on site. So 2 and
is direct expenses. So 2 direct expenses. Again, just write down the amount in the inner column because we have a accrued expenses as well. Accrued. So add 4,000. 1,000 plus 24,000. Next is cash receipt. So we have already find it out the amount of work certified over here. So amount of work certified is how much? 7,50,000. So here I will be writing down by WIP. And in that, the very first one is work certified. 7,50,000. Next is work uncertified. 1,50,000. Material return to stores. Again, contract account credit side by stores. 15,000. Is material in hand. So it will be written in the WIP closing material. So by stock of we have already done this adjustment. Wages outstanding and the direct expenses accrued we have already added. Now ये वाला adjustment लेंगे. A part of the plant costing rupees 20,000 was stolen at the beginning. So since this plant is going out, इतना loss हो गया हमें. So here we will be writing by loss by theft because it's stolen into 20,000. Now remember we also have to prepare a balance sheet. तो ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है एंड अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दोनों का इफेक्ट कहां पर जाएगा ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड सो वी विल बी राइटिंग डाउन wages or you can just first write it down expenses which we have to pay so expense payable and under it you can write it down wages amounting to 18,000 direct expenses 24,000 18,000 plus 24,000 will give you 42,000 so 42,000 will be written in the outer column फिर हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्टोलन हो गया तो एज आई टोल्ड यू 8,000 क्या हो जाएगा इट इज अ लॉस सो वट एवर इफ वी गेट अ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमें प्रॉफिट मिला या तो लॉस मिला यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ना नोशनल प्रॉफिट फर्स्ट एंड देन वी विल सी के हाउ मच अमाउंट वी हैव टू ट्रांसफर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फर्स्ट ईयर वी विल बी रिकॉर्डिंग दैट प्रॉफिट और अ लॉस जो भी आया वो and then we will subtract from that
loss by theft. So I will be writing down 8,000 rupees. And now we need to do the this calculation. देखो हमने अगर ओपनिंग प्लांट का लिखा है वैल्यू तो हमें क्लोजिंग प्लांट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अ प्लांट इज नॉट गिवन. तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट बाय अ वर्किंग नोट. So you can write down value of a plant at site. कितने का what was the cost of the plant which was been installed on the site? 1,20,000. So here I will be writing down cost of plant install 1,20,000. Now उसमें से you have to subtract the cost of the plant which has been stolen. कितने का स्टोल हो चुका था? 20,000 rupees. So less 20,000. 1 lakh minus 20,000 will give you 1 lakh 20 minus 20 will be 1 lakh. Now उसके ऊपर 20%. अब देखो हम ये 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज करे? द ओनली रीजन दैट इट वॉज बीन स्टोलन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द ईयर. मतलब फर्स्ट डे पर ही स्टोल हो गया तो ऑब्वियसली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं. सो दैट इज वाई फर्स्ट वी हैव subtracted the stolen part and then जो भी अभी बचा उसके ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे 20%. सो डेप्रिसिएशन इज 20%. 1 लाख का 20% comes to 20,000 rupees. 1 lakh minus 20,000. So WDV will be 80,000. So what is the value of a plant at the end? It is of 80,000. So where you will be recording it, contract account credit side under the head WIP. Oh, here you don't have to write it down by because internally हम लिख only stock of material will come. यहाँ पर आएगा plant at site. And this we have find it out to a working note. कितना है? 80,000. Now let's check. You need to see once whether you have recorded each and everything or still it's pending. Material record hua, then we have recorded the plant issued, labor, then plant installed, direct expenses. See establishment charges. So establishment charges, it will be debited. So to see always, even in the exam now, once you post now, just have a look and see whether you have posted each and every item or not. To establishment charges 15,000. So now we are done. So we need to first close this part. Let's see which side is higher, debit or credit. Credit side ka total is 10,21,000. Debit side ka total is 8,67,000. So obviously credit side is higher. 10,21,000 will be written on both the sides. So you got a notional profit. Write it down. था 8,67,000. So 10,21,000 minus 8,67,000. So हमें notional profit कितने का मिला? 1,54,000 का. Now the same way how you have to show this. अभी ये carried down है तो brought down करेंगे by profit brought down 1,54,000. Now you need to find out how much amount you need to transfer in the profit and loss account.
फॉर दैट वी हैव अ क्राइटेरिया. अब देखो हमारा कितना परसेंटेज ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, कितना कैश रिसीव्ड है, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. सो इफ द 80% ऑफ द वर्क इज नियरली कंप्लीटेड, तो कितना ट्रांसफर होगा हमारा? ऑब्वियसली 2/3. So 2/3 of the notional profit into cash received divide by work certified, क्योंकि उतने अमाउंट से हमें रिड्यूस कर देना है प्रॉफिट को, and the balance part will go in the reserve. So चलो find out the profit. 2/3 of notional profit, 2 divide by 3 into notional profit, 1,54,000. Now since we have a percentage which is given, so there is no need to write it down the amounts. कितना है? 80% है. Cash received is what? 80%. So cash received I will be writing down 80 divide by work certified कितना? 100. बिकॉज देखो हमने यहाँ पर भी वर्क सर्टिफाइड के लिए फाइंड आउट किया होल ऑफ द 100 के. इफ दिस 6 लाख इज रिप्रेजेंटिंग 80%, तो 100% का कितना? So if you calculate it up, you will be getting 82133. तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 82,133 रुपीज का. So here we will be writing down to profit. Is this we are going to transfer in profit and loss account. Which side is higher? Obviously देखो credit is higher, 1,54,000. So you need to record 1,54,000 on both the sides. तो अब जो भी राउंड मतलब बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? WIP में दिस विल बी आर रिजर्व. ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली द रिजर्व अमाउंट. सो टू WIP is work in progress. I will be writing down reserve. 1,54,000 minus 82,133. सो कितना रिजर्व में ट्रांसफर होगा अमाउंट? 71,867 रुपीज. तो हमने लायबिलिटी साइड तो साथ में ही कंप्लीट कर दिया था. नाउ वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास दैट हाउ टू डिस्क्लोज WIP in the balance sheet, and this WIP is nothing but it is a current assets, and how to disclose this current asset, that we will see. So हम सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाएंगे? WIP दिखाएंगे. सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? वर्क सर्टिफाइड. We have a work certified 7,50,000. Then we write work uncertified. $1,50,000. If you add this two, you will be getting 9 lakh rupees. Then इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं? We subtract the reserve first. So less reserve. और ये रिजर्व हमें कहाँ मिला? यहाँ पर. See this वाला रिजर्व. This will be subtracted. कितना है? 71,867. If I subtract the reserve from 9 lakh, I will be getting 8,28,133. Lastly, what we do? We subtract the cash which has been received. So cash received will be subtracted. कितना कैश रिसीव्ड हुआ है? 6 लाख रुपीस. $2,28,133.
Then what is the next one? ये जो प्लांट परचेज है, हम फिक्स असेट्स, सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिकॉर्डिंग होल ऑफ दिस। हाँ, हम असेट्स जितने भी, हम सिर्फ यहाँ पर बताया है शो द अमाउंट दैट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो हमें सिर्फ WIP के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। दे हैव नॉट ओनली आस्क्ड अस अबाउट द WIP, दे आर आस्किंग अस अबाउट के जो भी बैलेंस शीट में आएगा यू रिकॉर्ड दैट, ओके। तो हम ये प्लांट जो परचेज हुआ तो ऑब्वियसली दैट आल्सो वी विल बी रिकॉर्डिंग, जो भी WDV वैल्यू होगा आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी डन, तो दिस प्लांट का भी ऑल्सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट अप। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपीज हमें दिया, तो उसका इफेक्ट भी देना है, सो लेट्स गिव इट। We'll be writing down plant of 80,000 directly. There is no need to show whole of the thing because you have already done the working note for the same. देखो ये वाला working note किया, so directly take the WDV value, that is written down value of a plant. Next we have a closing stock also. Stock of material भी है हमारे पास 6,000 rupees का, so take the stock of material as well, closing value. And insurance company has paid 12,000 rupees. So insurance claim. Done. अब देखो ये प्रॉफिट कितने का आया था यहाँ से, एज आई टोल्ड यू के जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा उसमें से हम लॉस बाय थेफ्ट 8,000 माइनस कर देंगे, सो वी गॉट 82,133 में से 8,000 will be reduced, so 74,133. Now class, one more thing which you need to remember, contract account में your balance sheet won't get tally, and you do not need, you even there is no need to tally the balance sheet as well in this. आपको सिर्फ जितने भी ये है items है, that only you have to record it up and you have to just show it up. You do not have to tally the balance sheet in the contract costing, and rather it won't get tally as well, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे, सो वो टैली भी नहीं होगा और आपको करना भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन ऑल द थिंग्स व्हिच विल बी कमिंग एंड यू हैव टू जस्ट कीप इट अप। समझ में आया?